Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's create a new file here. Call it something. Maybe I call it something.asm. Whatever. And in this ASM, I create firstly the title. In title, I'm saying learning 8.86 ALP, assembly language programming. Then I will have, I want to have some macro firstly using a print. I say print macro MSG. Then I say move into, jaldi bataye, move into H. Because I want to, in macro, I want to print string. So move into H09H and shabash, 09. local address DX. किस में डालूंगा मैं? So firstly, I should push, huh? Message. Basically, I should first push AX. हाँ जी, और Push D. DX. push DX. क्योंकि ये दो registers में इस्तेमाल कर रहा हूँ, I should store them somewhere. And after you load the DX में किसका address डालेंगे हम? Message का. And then you call the Das Chachu, interrupt 21H, right? And then I should pop what? Back. First DX, then DX. AX. Then AX. Yes. Right? Okay. Yes. Now this is my AND macro, okay? This is the AND macro, ENDM. Now, after AND macro, I'm saying my model is small. Small. Okay? So dot model is small. After that, I will say, I will create some stack because I'm pushing and popping. So I need stack at 100H. Okay? Okay, and then dot data. In dot data, I'm getting right now only two things. I have one message, MSG1, DB, then go DB. for the new line and carriage return, right? Then some message. In the message, I'm saying the number is, for example, I want to print some number here. I say $sign, and I have got a number here, okay? That is of size DB, and in this I have the 05H. I have the 5, right? And I want to print it just to, make the yesterday's code concrete. Now I have got a dot code and dot, then start label. We already know it. And in here, I got a main proc. So when I say main proc, okay, then I need what? Move AX. This is the main procedure, and this is the main NPM. Okay, and after that, I also should exit. I should say dot exit and end start. This is how we do, right? This is boilerplate. And in the main proc, the boilerplate code, right? What is the boilerplate code? Yes. Move into Move AX, comma. AX, comma, at the rate of data. Now you should tell me quickly what it's all about. And move into what? DS. DS. DS, comma X. AX. So this is, S. we initialized our data segment, right? Done. Now I want to print firstly the message. What should I do to print a message? For To print a message, I will call the macro. How? Using its name, that is print MSG1. Now this MSG1 will go into this MSG, right? And after that, using the AH and interrupt 21H, it can print that message. $7 isko haan. Okay. Now I want to print this number. I want to print this number. So to print one digit, what should I put into the AH? 0 to H. Yes, 0 to H. 2 H. And then, but the number should be in, where should be the number? You're printing DL. Integer. Right now it's asking. DL. It should be in the DL. Yes. Whenever you use 0 to H, the number has to be in the DL register, right? So that there I have to move into DL what? This number, num. A. Num. Here. The number is in num. Okay? Because I put 05H in the num. Like otherwise I had this string in the message one. Right, same way I have this number in the variable num. Now
before I can print any digit to the monitor, I should move that number into the DL, because 0 to H works with DL register. DL. Whatever is in DL, that will be printed to the monitor and call the interrupt 21H. But if I give it a go, it will have a problem. Why is there a problem? If I run this ASM code, the number is, but it's saying after that some kind of a symbol, right? So what is the symbol coming up? Yes, sir. Anji, ASCII sir इसको adjust करना है. ASCII adjust करना है. ASCII adjust karna, because if we say the ASCII chart here, very good, shabash, Majid. Now you are getting things, that's nice. If you say, मैं खोलना है यार. If you see 5, okay, you are printing the 5 or 5H rather. It's okay. So it is something like Enquiry. enquiry or something, right? Enquiry. So it has printed us something, Yes, sir. some different thing. You know, it's so whatever it is printing, it's not printing 5. Why? So what should we do? We should ASCII adjust before, because I told you whenever you print to the monitor, it should be in ASCII form, है ना? Yeah. कहा था ना मैंने कि जब भी आप Yes. Yes, sir. ASCII. आप अगर इसको प्रिंट करना चाह रहे हो, किसको, you want to print a 5 here, for example, okay, you want to print 5, but firstly you need 0 to H in the AH register, then whatever the number, that Yes. should be in the DL register, but it should, whenever you print to the monitor, it has to be in the ASCII. When you give it the ASCII number, it converts it back into the decimal and prints it. So you don't have to give it 5, you have to give it 35. Okay? So that means if I do one thing, that means I have to ASCII adjust here before I print it. So I have to add what? To DL what? 30H, hexadecimal 38. 38. Now if I do that and I run it here, Then okay, if I run it here, run as ASM code, now you'll see it is printing me the 5. Right? Why? yes, sir. Because now in the DL, there is 35H. There is what? And 35H means 5 in ASCII. So you adjust, you only have to add any digit, because 0 means 30H. Because 0 means what? Because 0 38. means 30H. So 0 means 30H. So 5 definitely means 35. Okay, 6 means 36. So that means you have to add what? 30H, or in decimal 48. 30. In decimal, I'm saying in decimal it is 48. Okay, because 48 and 30 means same. I have told you last time also that thing. Now let me delete this all first. Delete is here, sorry. Okay, now if I have written it here like this, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे काम किया है कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है 5 in single quotes. Now if I give it a go, run as ASM code, now I'll still land into problem. It is printing something else. It's printing E, because it is gone. Because now when you put in a single quotes, it's already in ASCII form. So I'm saying it's not 5, it's actually 35H. Getting my point? It's not 5, it's 35 Yes, sir. already. So you don't have to ASCII adjust. It is already in ASCII. This is what I was trying to tell you yesterday. Last time I gave the classes. Okay. Shift and Comment. 20. comment it. Okay. So now I comment it, it will run fine. So I don't need to ASCII Yes. adjust now, because it is already in the ASCII form, right? Getting point? Or if it is not in ASCII form, it is, Yes, sir. for example, it was in hexadecimal form like this, then I can add here, say for example 30H, or if I add 48, what do you say? If I add 48, will it give me correct answer? Right, as ACM. It is still giving correct answer, because 48 means in decimal, in decimal. So I'm adding decimal 48, right? If you see the ASCII chart, you can see that
0 means 30H or 48. In 30H in hexadecimal and in decimal 48. So you add 48 or you add 30H. One in the Or when same. you are using hexadecimal, when you're using what? The Hexa, hexadecimal. then you have to use H here, right? If I say 05, for example, and you run ASM code, okay, it is still running fine because now I am saying this is the decimal because decimal 5 and hexadecimal 5 is same. So you put up H here or you don't put up H here. Up to 9 तक तो सेम ही है ना, जो डेसिमल है वही हेक्साडेसिमल भी है, ठीक है। उसके बाद जो 10 Yes, होता sir. है वो डेसिमल में 10 हो जाता है और हेक्साडेसिमल में A हो जाता है, तब प्रॉब्लम है, तब अलग है। यानी कि लेकिन यानी कि अगर आपने H के बगैर लिखा, ये इसको एज ए डेसिमल लेगा, क्या लेगा? डेसिमल। Decimal. लेकिन अगर आपको हेक्साडेसिमल, आप बता रहे मेरे को 30 करना है इसको ऐड, सो अगर मैं 30 ऐड करूंगा, इट वोंट बी इट विल ऐड डेसिमल 30 टू इट. So therefore, I have to write 30H, not 30, hexadecimal 30. Okay. Getting? So clear हो रहा है Yes, concept? sir. अच्छा जी, अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, Yes, sir. मैं इसमें प्रोसीजर्स भी ऐड करना चाहता हूँ. आई वांट टू ऐड अ प्रोसीजर इन इट. सो हाउ टू ऐड अ प्रोसीजर? मैं कुछ प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ. मे बी आई हैव समथिंग प्रोसीजर हियर. फॉर एग्जांपल मैं डाउन साइड एक प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ. आई वांट टू कॉल दैट. मे बी I want here to write something. Message 2, for example. What is this? This is the number is then the num. Then I got to message second. फर्ज कीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ and all that. We'll do that tomorrow. But today I want just concentrate on the concept. I got a message second, and here I got DB. 10. One second, I will just remove this. That will be good. Let me remove the output, JSONs and all. Okay. Now I got message DB, then the new line and carriage return. Then what? I'm saying I am in procedure. I am in procedure. Then I got a message Procedure. MSG4, which is telling DB 10, 13, double close, back in main proc. I'm back in main proc. Okay, both should have the dollar at the end, otherwise it will have some issues. Okay, because our message printing is happening up to dollar, so dollar has to be there. So dollar means end of that string which you want to print using the 09H and interrupt 21H combination. Then the dollar has to be there. Okay, now what we do, I want to create a procedure here. So if I want to create some procedure here, maybe I want to create a procedure is just call it something, some procedure. Maybe I call it some PRINT message MSG procedure. Huh? When I say procedure, I have to use proc. Okay, then you end this proc procedure, and also there should be when you end the main procedure and P, before that there should be a return. There should be a return. अब ये जो आपका मेन प्रोसीजर था वो तो खत्म ही होने वाला था, इसलिए रिटर्न ने कोई फर्क नहीं डाली. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे इसको ये जंप लगाएगा इसके ऊपर. फर्ज कीजिए मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे, इससे पहले कि मैं प्रिंट मैसेज 1 करूँ, उससे पहले ही मैं यहाँ पे पहली लाइन ही कॉल कर रहा हूँ टू द प्रोसीजर. आई एम कॉलिंग टू प्रोसीजर. बट वेन एवर यू कॉल टू द प्रोसीजर, you have to use what? Calling to procedure. What? When you call to the procedure, you have to use the call. Call this print message. Okay. But when you have to call to the macro, you have to only say the name of the macro and whatever you want to send it. Right? So this is calling to procedure. This is calling to what? Macro. Right? See the difference. We have already done these things, but I'm just want to make it sure that you are learning properly. This is calling to macro, right? अब कॉलिंग टू मैक्रो में आपने मैक्रो का नाम लिखा है और मैसेज 1 जो भेजनी है, और प्रोसीजर को कॉल करने के बाद आपको कॉल इस्तेमाल करनी पड़ेगी. ठीक है, इतनी डिफरेंस है. अब ये जो प्रिंट प्रोसीजर है इसको
ये जो प्रिंट प्रोसीजर है, कमांड सी एंड कमांड वी, we need to end also. So what should be here? ENDP, end procedure. But before doing that, I should also say the return. कि अगर रिटर्न नहीं करोगे रिटर्न मारेगा ना, से अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल हैपन, ये यहां से जब जाएगा ना, लाइन नंबर आएगा 22 सो ऑन एंड 26, 26 से जंप मारेगा टू लाइन नंबर 36, ठीक है ना, ये एंड और करेगा ये काम करेगा। जब इसने ये काम किया, इसमें जो भी काम, ऊपर, और ये वापस नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। सो रिटर्न से इसको हम क्या कहेंगे कि भाई साहब आपको इधर नहीं जाना, आपको वापस जाना है टू द लाइन नंबर 27, सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस कोड, ठीक है ना। इट विल जंप फ्रॉम लाइन नंबर यहाँ 40 के बाद 41, 41 में रिटर्न है, रिटर्न के बाद वापस आएगा जहाँ से आया था, ठीक है। सो ये असल में जो स्टैक होता है उसमें जब जब भी आपकी प्रोसीजर, क्योंकि मैक्रो प्रोसीजर मैं आपको ये बताया था कि जो मैक्रो है, यहाँ जैसे यहाँ पे प्रिंट मैसेज 1 है, असल में होगा क्या कि ये इरेज होगा, असल में होगा क्या कि ये जो वाली लाइन है ये इरेज हो जाएगी, इसकी जगह ये 3 लाइंस जो मैक्रो की लाइंस है वो प्रिंट हो जाएगी। ये लाइंस है ना, जो ना मैक्रो के अंदर है, ये पहले वो पुश वुश वगैरह करके ये सारा जो कोड है, कमांड्स, ये सारा जो कोड है ना यहाँ पे, ये सारा कोड कमांड सी, ये यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट हो जाएगा, जहां आपने प्रिंट मैसेज लिखा कमांड वी, ये ऐसे हो जाएगा, एज इफ कि आपने ये जो प्रिंट मैसेज नहीं लिखी बल्कि यही कोड लिखा था, तब भी काम करेगा ना ये, ठीक है। मैक्रो ऐसे ही काम करता है, ये कॉपी पेस्ट करता है। तो जिधर जिधर आपने मैसेज वन प्रिंट 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 लिखा है, यानी कि आपने इसका नाम लिया है मैक्रो का, जहां जहां नाम लिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स वहां पे पेस्ट करेगा उसकी जगह। इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। तो जिधर जिधर आप, जैसे हैश डिफाइन होता आपको होता था ना सी में, तो जहां जहां आप वो इस्तेमाल करते हो वहां वो पेस्ट करता है वो चीज। तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कॉल ही करेंगे प्रिंट को, ताकि कोड सिंपल दिखे, और ये मगर पेस्ट करेगा। लेकिन ये जो कॉल प्रिंटिंग वाला है, जो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में क्या होगा भाई साहब, इसमें फर्क पहले ये है कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू सेंड, यू कांट सेंड एनीथिंग टू इट। जैसे आपने मैक्रो को कुछ भेजा, आप मैक्रो को भेज रहे हो ना, यहाँ पे मैक्रो को आपने मैसेज, इसको मैसेज में कुछ डाला, ये भेज रहे हो आप, लेकिन वहां पे जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसीजर है आपका, उसको कुछ भेज नहीं सकते। दूसरी बात कि आप जब प्रोसीजर करते हो, जहां आपने कॉल किया, ये कॉल की, वहां से वो जंप मारता है टू दिस लाइन ऑफ कोड, यानी कि वो यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो सीधे जंप मारता है, ठीक है। और यानी कि इसने स्टैक के अंदर ये एड्रेस 26 स्टोर किया होगा। जब अब ये जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, जो नीचे जा रहा है ये, ठीक है, ये गया नीचे, नीचे गया, अब इसने सारा प्रोसीजर में जो भी चीज थी वो की, ठीक है ना। प्रोसीजर में अब जो भी चीजें थी, ही हैज डन दिस ऑल थिंग्स। जब रिटर्न आ गया, ये स्टैक को देखिएगा भाई, मैं किधर था इससे पहले, एक वो कह रहा है कि लाइन नंबर 26, अब यहाँ पे लाइन नंबर 26 नहीं होगा, बल्कि वो लाइंस ऑफ कोड जो एड्रेस होगा, जो कोड सेगमेंट के अंदर, ये कोड सेगमेंट है, वहां पे जो लाइंस का ऑफसेट होगा कि हम कहाँ पहुंचे, आईपी का, आईपी पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पे पहले था वो एड्रेस स्टैक के अंदर, यानी कि यहाँ पे लाइन के हिसाब से 26 लाइन पे हम थे, वहां पे कोड के हिसाब से होगा किस ऑफसेट में मेमोरी में वहां पे वो लाइन ऑफ कोड थी। अब इसको बता रहा है कि स्टैक तू तो लाइन नंबर 26 पे था। ये जो रिटर्न है, ये क्या काम करेगा, रिटर्न यहां से वापस। हाँ, ये यहां से वापस जाएगा टू लाइन नंबर 26 यहाँ पे, यानी कि अब ये लाइन नंबर 27 शुरू करेगा करना, तो करेगा ये लाइन, फिर वापस आएगी करेगा। यानी कि प्रोसीजर जो आपका है वो जंप मारता है, वो क्या मारता है, जंप। इसीलिए उसमें जो होता है कि आपका जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे आपका प्रीफेच क्यू है। यानी कि जब आप एक लाइन ऑफ कोड कर रहे थे, तो पहले लाइन आप मान लीजिए आप यहाँ पे हो इस वक्त, ठीक है, यानी कि जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो काम कर रहा है लाइन नंबर 22 पर, हो रहा है। इन द मीन टाइम ये जो बाकी लाइंस ऑफ कोड है, ये प्रीफेच क्यू में आ गई, ठीक है। इस 6 बाइट प्रीफेच क्यू में ये लाइंस उठा के आ जाए, ताकि फिर जो नेक्स्ट लाइन करनी है वो ये करनी है ना, जब मैं ये कर रहा था, अब ये लाइन ये एग्जीक्यूट करना है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं फ्रॉम मेमोरी, तो ये फास्ट हो जाता ना। लेकिन अब जब आपने जंप मारी,
यानी कि फर्ज कीजिए आप इस वक्त इस लाइन ऑफ कोड पे हो, लाइन नंबर 26, लेकिन इसके बाद प्रीफिक्स क्यू में क्या क्या है, 27 28 एंड दीज लाइंस वो यहाँ पर प्रिंट एमएस है ना, ये 27 28 29 ये लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर है। लेकिन जब यहाँ से आपने जंप मारी इधर, अब तो आपको 37 लाइन ऑफ कोड करना है, आपको तो 27 करना ही नहीं है। यानी कि ये वाला सारा किस्सा जो है वो फ्लश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब ये वाली जो लाइंस हैं ये लानी पड़ेंगी आपको प्रीफिक्स क्यू में, ठीक है ना। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विच। स्विच। इतना ही नहीं बल्कि आपको एड्रेस भी याद रखना है कि भाई मैं किस एड्रेस पे था, वो स्टैक के अंदर रहना चाहिए कि मैं कहाँ किस एड्रेस पे था, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो किधर जाओगे। अच्छा, उस वक्त आपने रजिस्टर्स पे कुछ डाला होगा, एक्स रजिस्टर में कुछ है, डीएक्स में कुछ है, बीएक्स में कुछ है, सीएक्स में कुछ है, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स आपने फर्ज कीजिए इस्तेमाल की हैं अभी तक, उसमें माल है। अब इसमें वो चीजें ओवरराइट हो सकती है ना, यानी कि वो सारा जो आपका यस है सर। प्रोसेसर का स्टेटस, यानी कि आपको एक किस्म का स्नैपशॉट लेना है कि उस वक्त प्रोसेसर में क्या हालत थी, एक्स में क्या था, बी एक्स में क्या था, सी एक्स में क्या था, आईपी में क्या था, वो सारा आपको सेव करना है। व्हाट इज कॉल्ड एज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हमें सारी चीजें सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वापस आएंगे ना हम, हमारा वापस स्टेटस वैसा ही मिलना चाहिए जैसे इससे पहले था, ठीक है। बस बात समझ आई। सो वी हैड टू रिस्टोर एवरीथिंग फ्रॉम द यस पीसीबी, सर। वी रिस्टोर एवरीथिंग एज इफ हम कहीं गए नहीं। समझ में आई बात? वरना तो वो खराब ही करेगा ना सारा। यस। बस इसीलिए इसीलिए हम इसीलिए हम कहते हैं कि भाई साहब जो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच है, दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच इज वेरी कॉस्टली। यू हैव टू सेव ऑल दोज थिंग्स, यू हैव टू यूज स्टैक, यू हैव टू flush these instructions and then load new instructions, so it will take some time. So therefore we will not do the procedures for a simpler code, we use these calls for the longer code। अगर बड़ा कोड है तो उस लिए करो ये, अगर छोटा कोड है तो फिर मैक्रो ही ठीक है, क्योंकि मैक्रो में ये कॉन्टेक्स्ट स्विच का पंगा है ही नहीं। मैक्रो क्या करता है काम, वो सिंपली जो आपके वो चंद लाइंस हैं वहां पे वो पेस्ट करता है, दैट इज इट, ठीक है। सो अगर आपका छोटा कोड है फिर यस सर। मैक्रो ठीक है, फिर मैक्रो ठीक है, फिर क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा, बाकी चीजें नहीं हो रही हैं, पीसीबी हमारा स्नैपशॉट नहीं ले रहा आपकी प्रोसेसर का एंड ऑल दैट, सो देन इट्स गुड कि फिर मैक्रो ही इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपका लंबा चौड़ा कोड है, फिर क्योंकि अगर लंबा चौड़ा कोड है और 10 15 बार 20 100 बार आपके पास कॉल्स है और वो पेस्ट करता जाएगा और आपका कोड बहुत बड़ा होता जाएगा, है ना। सो आपका बलून अप हो जाएगा आपका कोड, और वो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, अगर आपका बड़ा कोड है तो फिर प्रोसीजर ही करो, ठीक है। और अगर छोटा कोड है फिर मैक्रो करो। ठीक आ गया, हो गया कंसेप्ट क्लियर इसका पक्का। इसके बाद तो कंफ्यूजन है ना, नहीं यस सर। चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं काम, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस हेयर। अगर मैं यहाँ पे मैक्रो को ही कॉल करूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मैसेज यहाँ पे कि प्रोसीजर आई एम इन प्रोसीजर, और उसके लिए मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि मैक्रो प्रोसीजर में हम कुछ और काम करेंगे जो उसमें काम करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आई वांट टू कॉल द मैक्रो, आई एम कॉलिंग इन प्रोसीजर द मैक्रो एंड सेंडिंग इट msg2। We had 10 minutes left in meeting. We have I'm saying print msg2। एंड जब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, जब मैं वापस आऊंगा मेन के ऊपर, जहाँ कॉल की थी मैंने ये, here I call the again the macro print macro यहाँ पे, इसके बाद प्रोसीजर के बाद I say print macro and I print message 3, that is I coming back to main, that's message 4, right? I have written message 4 here, so it should be message 3 only because मेरे पास 3 ही messages हैं, तो आप 4 भी लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। सो होगा क्या कि लाइंस ऑफ कोड आ जाएंगी, पहले आपका प्रिंट मैसेज, आपको कॉल हो जाएगी मैक्रो को, तो जब कॉल होगी ये जंप मारेगा कहाँ पे, लाइन नंबर 37 को। और यहाँ पे मैंने तो लिखा था कहीं पे, वो कहाँ पे लिखा मैंने, अरे यार रिटर्न की बात लिख रहा हूँ मैं, दैट्स बैड, नीचे फिर टेल मी ना। इसके बाहर। रिटर्न की बात थोड़ी ना लिखना है, रिटर्न का मतलब है कि वापस जाओ, ओके। इस मैक्रो में मैं सिर्फ एक सर ही चीज कर उल्टा रहा हूँ। लिखा सर। सर सर ऊपर प्रिंट लिखना है मैसेज ना, टू प्रिंट msg2 ऊपर लिखना है, 38 लाइन 44 44 वाली लाइन को ऊपर लेना है ऊपर और लेना है। रिटर्न को भी ऊपर। आपने मैक्रो को एंडिंग कर दिया। अच्छा एंड मैक्रो, 44 लाइन ये है, हाँ, 44, हाँ हाँ। यस यस, प्रिंट मैसेज टू।
सो प्रिंट मैसेज टू रिटर्न के पहले होना चाहिए। सो ये जंप मारेगा इधर, प्रिंट मैसेज टू करेगा। प्रिंट मैसेज टू क्या करेगा, वो मैक्रो की लाइंस यहाँ पे चिपकाएगा और वो आपको मैसेज टू प्रिंट करके देगी, ठीक है ना, 09H और इंटरप्ट 21H की मदद से। देन यू रिटर्न बैक टू वेयर, रिटर्न बैक टू द लाइन नंबर 27, जहां आपको मैसेज थ्री प्रिंट हो रही है कि भाई साहब मैं वापस मेन में आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट मैसेज वन हो जाएगा कि भाई साहब द नंबर इज, उसके बाद हम इस की मदद से नंबर को प्रिंट करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको, लेट मी गिव इट अ गो, अगर हमने कोई एरर नहीं किया है तो पहले ही बता रहा है एडमिन प्रोसीजर, क्योंकि पहले ये जो कॉल हो गया यहाँ पे लाइन नंबर 26 और ये उतरेगा यहाँ पे, है ना, और वहां Yes, मैसेज sir. टू प्रिंट होगी यूजिंग द मैक्रो ओनली। सो ई सेइंग आई एम इन प्रोसीजर। उसके बाद ये वापस जाएगा और लाइन नंबर 27 करेगा, वहां फिर से मैक्रो की मदद से हम मैसेज थ्री प्रिंट कर रहे हैं। मैसेज थ्री क्या मेरा है, बैक इन द मेन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट मैसेज वन हो जाएगी, जो कि है क्या, कि द नंबर इज, आ गया द नंबर इज। Is 5. उसके बाद जो ये आपका है 02H एंड ऑल, इट विल प्रिंट मी द नंबर यूजिंग द 02 एंड DL। ठीक हो गया, परफेक्ट। Yes, sir. हाँ जी, कोई इश्यू इसमें, एनी No, sir. क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस सर। अब ये फिर से देख लेना, अगर इसमें कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वी विल मूव फॉरवर्ड बाय टुमारो। ओके, ओके सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर हाफिज़। हाँ, क्वेश्चन। कॉलेज में क्या बोलना है जुनेद सर की क्लास का? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर मैनेज कर लूंगा खुद। आप बाकी की क्लास दे देना, ठीक है। यस सर. जो बाकी क्लास है ना वो दे देना आप, ठीक है, फॉरगेट अबाउट मी। ठीक. हमारी तो होगी, ओके सर, तो मैं अगर वो कोई बोल बोलेगा जुनैद से क्लास, जुनेद सर. बोला होगी क्लास, ठीक है, ओके सर. बोला उसकी क्लास हो गई, थैंक यू सर. दैट इज इट। ओके। ठीक है सर.